and welcome back to my channel. This is Nishtha Aggarwal, and last video I made about the makeup for your interview, and now मैं आपको बताऊंगी कि आप हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हो if you have my lens. Okay, so here we go. See, now if you have short hair like hair this, so आप उनको अच्छे से ट्रिम करा लीजिए. Okay, ends should look nice, and वो आप इतने बाल लेकर जा सकते हो for the interview खोल कर. और अगर आपके इससे ज़्यादा लंबे बाल हैं, मेरे जितने बाल हैं या फिर इनसे थोड़े छोटे हैं, देन आपको बन ही बनाना है फॉर द इंटरव्यू. आपको पोनी नहीं बनानी है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर प्रेफरेबली फॉर द इंडिगो एयरलाइन इंटरव्यू, तो उसमें आपको पोनी नहीं बनानी है. फॉर स्पाइस जेट और अदर्स यू कैन मेक. फॉर विस्टारा एज वेल यू हैव टू मेक अ बन. आप फर्स्ट राउंड के लिए भी आपको बन ही बनाना है, नो पोनी टेल्स. ओके, बिकॉज bun looks more formal than a ponytail or open hair, so you have to look formal and professional. So for that reason you have to make a bun. So now I'll be telling you how to make it. So first of all आप अपनी partition कर लीजिए. ओके, मैं दोनों साइड से निकालती हूँ, इवन मैं बीच की भी मांग निकालती हूँ. सो आई हैव डन लाइक दिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा यहाँ से पार्ट निकालेंगे फॉर योर हेयर स्टाइल आपके आगे से. Then make a ponytail. लेकिन आप इस साइड के बाल लेंगे, पीछे लेंगे, आगे नहीं रखेंगे. Okay, so put a rubber band here. Any color rubber band you can take, but वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए. Make 3 ties because वो फिर आपका बन loosen up होता जाता है and it will create problems. So मैंने इसको बना लिया है 3 knots. Okay, I am telling you very simple hairstyles, not कि आप बना नहीं पाओगे. They are very simple. I'm just telling you 2 or 3. Okay, now from here take step by step this and then this, and then do them like this. Okay, take another one, another layer, do it like this, take another layer, okay, and then you gotta put them like this. आप पिंस रखेंगे अपने साथ और आप पिंस लगाएंगे. ओके, आप ये आगे से ठीक कर सकते हैं. लाइक मेरे अभी थोड़ी ऑयली बाल हैं. And then this, your pony, roll it like this and make a bun. You have to see what suits on your face. Okay, it should not be very high bun, it should not be very low bun. Okay, and then pin them up. You can use Juda pin, or you can use bobby pins, or you can use tic tacs as well, whatever suits, whatever you can help it. And then this, because जैसे मेरे बाल यहाँ से निकल रहे हैं और इनका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कटे हुए हैं. And then this bun net, ये आपको कहीं से भी easily मिल जाएगा और एक्सपेंसिव भी नहीं होगा. You gotta apply it like this. आप देख लेना, अगर आपका ये नेट ढीला है तो आप उसको ऐसे 2 बार रोल करिएगा तो वो हो जाएगा. ओके, एंड आपके जो भी बाल निकले हुए होंगे वो आपको सेटल करने हैं. आप देख लीजिए कि अगर आपके कोई भी बाल उठे हुए हैं यहाँ से, पीछे से, यहाँ से, कहीं से भी, दे हैव टू बी सेटल्ड. ओके, एंड दिस इज़ द वे यू कैन मेक अ बन. Okay, you can see it. This is really very damn easy and this will even suit your face. Okay, so here is our first one, first hairstyle. Now मैं क्या करूँगी, मैं बन बना कर रखूँगी and I'll go on for another hairstyle with this. So the another hairstyle is, जो भी center partition निकालते हैं, center partition आप निकालिए. Okay, और do not do anything, just roll them up.
ये अपना एक पार्टीशन लीजिए, इसको ऐसे करिए एंड कीप ऑन डूइंग इट. ओके, एंड पिन इट अप. Same goes here. Okay, so this is your another hairstyle. You can see फॉर्मल हेयर स्टाइल इज योर बन, और आप आगे से आपके बाल कहीं से भी इधर उधर नहीं दिखने चाहिए, नहीं गिरते हुए आने चाहिए आपके फेस पे. दैट इज योर फॉर्मल हेयर स्टाइल. You have to look neat and tidy. Okay, so this is another hairstyle, and now let's move on to our third hairstyle. Okay, so now for the people जो इस साइड की पार्टीशन निकालते हैं. ओके अभी क्योंकि मैंने उस साइड का निकाला हुआ था तो ये वाले बाल मेरे बाहर हैं, तो आप जिस भी साइड का निकालेंगे आप ये ध्यान रखिएगा कि उस साइड के आपको बाल ऊपर लेने हैं. ओके अभी मैं इसको पिन से सेटल कर दूंगी. नाउ फॉर दिस साइड, फॉर द क्लासी लुक, माई एक्सपीरियंसेस कि आप दोनों साइड ट्राई करके आप दोनों साइड ना बनाएं, आप एक साइड का बनाते हैं, इट लुक्स गुड. ओके सो अभी हम यहाँ पर ब्रेड बनाएंगे. अगर आपको फिश ब्रेड आती है या फिर फ्रेंच आती है, फ्रेंच पोनी टेल आगे से, तो आप वो भी बना सकते हैं. मेरे को नहीं आती है, आई कैन नॉट मेक इट. This is the way you make a braid, make a braid, make a braid. ओके सो अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका ये ऐसे नहीं रहेगा, आपके बहुत सिल्की या ऑयली बाल हैं और यू हैव गॉट रिबॉन्डिंग और स्मूथिंग डन, देन आप इसमें रबर एंड मिस लगा कर फिर उसके बाद इसको आप ऐसे कर सकते हैं. लाइक मैंने रिबॉन्डिंग नहीं कराई है, मेरे ठीक हैं बाल, नॉट टू सिल्की नॉट टू ड्राई, दे आर फाइन बाय मी, फॉर मी. ओके सो आप ऐसे लगा सकते हो. And for this side you can put a pin. Okay people, so tell me, isn't this formal? Your hair looks tidy, neat and clean, and आपके hair अच्छे लग रहे हैं, so आपका face भी अच्छा लगेगा, and with your makeup on you look really very good. ओके सो आपको ये देखना है अपना बन कि आपका ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, आप बीच में भी बना सकते हैं. Okay, and this is the tips I know about for your hairstyle. I do not go for much of the hairstyles, but as I felt that I should make a video on this as well, as I made for makeup, so I've made it. And you can do it like this. Okay, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका बीच का पार्टीशन है. Then you can do one thing as well. आप अपना बीच का पार्टीशन लीजिए. ओके और आप दोनों साइड यू कैन मेक ब्रेड्स एंड
Similarly on the other side. You gotta see what suits you more. Which hairstyle, which partition suits you more. Okay, and accordingly you should make your hairstyle. Okay, and this, and with regard to this, if you're making a center partition, then your bun, it should be downwards. It should be in the center, or you should make a lower bun rather than making a high bun. So I'm showing you that as well. सो अब इसमें हम हाई पोनी नहीं बनाएंगे, इसमें हम लो पोनी कर देंगे. If you are doing center partition, your low bun looks more good than the high bun. Okay, low pony. If you're putting a net, you need not to concentrate more on your bun, and I would recommend you to put a net, bun net, क्योंकि वो आपके हेयर को ज़्यादा अच्छे से रखेगा, इधर उधर नहीं जाएंगे बाल, even if you are traveling. Put a net. नेक्स्ट ध्यान से लगाना, कभी सुबह आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और लगाते लगाते टेयर अप ना हो जाए. Okay, so here is another hairstyle. You can make it like this. ओके सो आप एयर्स में अपने पहनेंगे, आप अपने टॉप पहनेंगे पोल्स. सो हेयर आर दी पोल्स. दिस इज द साइज you should wear. This is the indigo size, and I'm showing you hair the balls. Okay, so now I feel you won't get confused for the size and for the hairstyle as well. I've told you about the makeup as well, and if you know anything about the interview or any other thing related to your skin, related to anything, I can guide you about that as well. You can mention that in the comment section and I'll make a video on that for sure. Okay, thank you so much guys for watching my video. Keep liking my videos and subscribe to it, and you can always comment. Thank you so much. Cheers to life and all the best.